वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ टुडे। नॉर्मली एक ही जाता है, बट आज आई थॉट आई विल शेयर दिस इंटरेस्टिंग वेंकीज ट्रेड विथ यू। सो दिस विल बी अ बार बाय कैंडल ट्रेड एनालिसिस ऑफ वेंकीज। और अगर इसका टेक्स्ट वर्जन देखना है, देन यू कैन फाइंड इट ऑन ट्रेडिंग व्यू। सो दिस इज द ट्रेडिंग व्यू text version of it, and it will also soon be on investing.com. If you did not know, I write, I contribute on investing.com, so उधर भी होगा. But anyway, this is the video form, so I thought I'd share it with you. I thought I'd share कि मैंने किधर partial exits किया, मैं कितना trail कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ. So starting things off, this is the daily chart. No indicators here as of now, but if you want to see moving averages, then you can see कि ये जो candle है, जो जिधर पे entry जैसा था, उधर से around 50 MA थोड़ा सा दूर है. So roughly that area. And this tool right here, these lines that you see are basically fib extension. They are fib extension, they are fib channels. So these fib channels that you see, these are indicative. So they had no role to play in my decision of taking a trade or no. But मैं सिर्फ वो टेस्ट कर रहा हूँ. So hopefully very soon, once my testing is done, a video on that will also be out shortly. But anyway, jumping into the entry. So here we can see ऐसा range breakout जैसा हुआ था, और RSI भी 60 के ऊपर था. So that was a good point to enter. My entry was around 1719, and we can see that it's a good strong range breakout of sorts. उसके बाद के दिन पे, सो बाय द वे, इफ यू आर चेकिंग द टेक्स्ट वर्जन आउट, यू माइट सी कि ये अल्फाबेट्स इधर है. दैट इज नॉट रिलेटेड टू एलियट वेव एट ऑल. दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस. सी हियर, दीज आर दीज अल्फाबेट्स. सो एनीवे, बैक टू द चार्ट. जो A है उसमें हम लोग देख सकते हैं, दैट इज द एंट्री. RSI 60 रेंज ब्रेकआउट, हैव मार्क्ड इट ऑलरेडी ऑन द चार्ट. एंड द B इज बेसिकली कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था वो दिन पे, एंड वी कैन सी द मूव इज अराउंड 17.65%. And it's got tremendous volumes. In fact, it's the highest volume candle that we've seen since quite some time. We can see कि pretty much पिछले एक साल में तो वैसा आया नहीं था. 2 साल में भी नहीं आया है. बहुत बहुत हाई वॉल्यूम था. 3 साल में भी नहीं आया है. So one of the highest volumes ever was there on that day, and that obviously means कि काफी लोग enter कर रहे थे, काफी action हो रहा था. After that, coming to the C, what we can see here is कि यहाँ पे थोड़ा सा price rejection जैसा हो गया था higher levels पे, and what we can see is कि gap up हुआ, but then higher levels जो highs से थोड़ा selling आ गया, and we saw it coming down a little. But ये point पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि okay, let's see what happens. You know, गैप उसने होल्ड करके रखा है, एंड इट इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू द 2000 लेवल. सो इफ यू लुक very closely, you can see कि 2160 था लो, which is also about 2100 2150 और वो सब. So even though there was some selling happening at higher levels, उसने फिर भी जो levels थे उसको hold on करके रखा था. So that is why I held on to it. Next day after that, 8.64% up. So that sort of showed me that okay, ठीक है, possibly Venkeys is the type of stock जो एक बार हाई करता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, and then it might show signs of weakness, and then it will jump up very sharply. So that is one sort of observation that I had at that time. That is the D candle. E candle ये क्लस्टर जैसा हो रहा है, उसमें क्या दिखाता है कि हायर लेवल्स पे फिर से थोड़ा सेलिंग आ गया था, एंड वी कैन सी दैट्स एन इन्वर्टेड हैमर हियर. एंड एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि ओके, लेट्स सी क्या होता है. वो जो इन्वर्टेड हैमर्स है उसके लो के नीचे आई कीप माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर पार्शियल क्वांटिटी. रीजन बीइंग कि मैंने इतना होल्ड किया था. सो इफ वी कैन सी हियर, आई जस्ट ट्राई टू शो यू माय returns at that point. This would have been around 30-35% ROI. सो मेरे को ऑब्वियसली 30-35% का जितना मिलता है उतना चाहिए था. मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं ऐसे पकड़ के रखूँ और फिर जाए तो 100%, नहीं जाएगा तो जीरो. वैसा नहीं करना था. सो आई हेल्ड ऑन टू अ लेवल वेर आई वॉज कंफर्टेबल विथ, और उधर एक बार ये लोज ब्रीच किया, फिर मैंने पार्शियल एग्जिट कर लिया. इवन दो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, डिस्पाइट दीज नेगेटिव कैंडल्स, देर इज अ चांस कि इधर जैसा हुआ वैसा ही हो सकता है, कि वी कैन सी अ शार्प मूव. बट आई हेल्ड ऑन टू इट. उसके बाद हम लोग ने थोड़े सेशंस में कंसोलिडेशन जैसा देखा, एंड देन जी कैंडल, ये जो क्लस्टर है, उसके बाद मेरे को लगा कि ओके फाइन, मे बी प्राइस इज टेकिंग सम सपोर्ट एट दिस लेवल. सो दैट इज अ गुड साइन. एंट्री एग्जिट कुछ नहीं किया, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एट दिस पॉइंट.
Then H candle जो है that basically shows a fake attempt at a breakout or a failed attempt at a breakout. प्राइस ऊपर गया, हाई हम लोग देख सकते हैं 2492 है, बट एक्चुअली क्लोज इज जस्ट 2359, सो अराउंड 140 पॉइंट्स इसने नीचे आ गया हाई से. बट अगेन दिस इज नेचुरल, हम लोग ने देखा है पहले ऐसा बहुत होता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस हियर आल्सो. वी कैन सी थर्ड फेब, सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस हैपनिंग, सो आई हेल्ड ऑन टू इट स्टिल. नेक्स्ट डे डोजी था और उसके बाद आई जो कैंडल है, ये आई कैंडल, that shows us a very strong movement. Again, volumes were not ridiculously high, but काफी high था. And the price move was also very good, around 10%. So circuit लगा होगा वो दिन. And after that we are seeing a few indecisive candles. So ये spinning top हो गया, थोड़ा selling pressure वाला candle है, ये inverted hammer हो गया, another inverted hammer. This is actually a gravestone doji type हो गया ये. And around this point again मैं फिर से caution पे आ गया, मुझे लगा कि ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है. Even though Venkeys का personality ऐसा है that after showing us some resistance at these higher levels, at these high levels, it can still shoot up. मुझे लगा okay ठीक है, let's see what happens. And I kept my trail mentally. I did not put it in the system because I just wanted to see how it goes. At this point, I was fairly comfortable with how the stock was moving. So थोड़े दिन बाद, I think on 10th June or so, right around here, which is the L candle, 10th June or so के आसपास कोई न्यूज आया कि China has banned the import of frozen seafood from 6 companies. And the next day Venkeys was obviously down. उतना नीचे नहीं गया था, but I thought that okay, last time when this bird flu thing happened, Venkeys saw like a 25% dip. तो मेरे को लगा उससे अच्छा है partial quantity निकल जाता हूँ, let's see what happens. So once 2700 was broken, I waited for a bit and then I exited partial quantity. In hindsight, possibly ये जो inverted hammers है उसके lows को जब तोड़ा था, similar to F वाला जो candle है, that might have been a better place to exit, but hindsight is always 2020, so it's not really a problem. And then I partially exited there. फिर ऊपर नीचे हुआ, again we can see some consolidation happening. And then कल 21st June को it was up 8.37%. आज it is up 18.48%, which makes my total ROI on this position as of now at 98.98 है actually. Upper circuit पे I think 103% था, but now it is 98.98%. So that is a quick little analysis of this trade. And the thing is normally क्या होता है, including myself, विनर्स को थोड़ा जल्दी कट शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब विनर्स के जो प्रॉफिट बुक हो जाता है, दैट इज अ लिटिल अर्ली in many cases. So in this case, because I was able to hold on to it and I'm still holding on to it, you can see I'm still trailing partial quantity. I just wanted to share कि मेरा thought process क्या था at every stage, and it is honestly because of these partial exits कि मैं इतना ज़्यादा hold भी कर पाया. Because normally क्या होता है, अगर 50% ROI दिख रहा है और हम लोग फुल क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार इसके ऊपर कितना जाएगा, चलो एग्जिट कर देते हैं. बट जब भी पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर लिया होता है, तभी वी हैव दैट एडिशनल सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ओके आई हैव ऑलरेडी बुक्ड पार्शियल प्रॉफिट्स, थोड़ा पैसा मैंने जेब में डाल दिया है, अभी उसको जो करना है वो कर सकता है. सो just wanted to record that quick little video. And if you like this, make sure you like it, share it. Description mein, as always, there will always be resources. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.